Dear students, in the previous lecture we discussed positive real functions. Now we are going to start synthesis of electrical networks. That means we have to design an electrical network. The network function will be given to us. Network function means either admittance function or admittance function will be given to us. We'll have to design the electrical network. So we know that an electrical network, passive network, consists of resistor, inductor and capacitor. So we have to synthesize the network with any of the two elements among R, L and C. That means a network function will be given to us. We'll synthesize the network with LC, then we'll synthesize the network with RL, and then we'll synthesize the network with RC. So there are four methods for synthesizing an electrical network. First is Foster 1 form, or it is also called Foster series form. Second is Foster 2 form, or it is also called Foster parallel form. Then Core first form, and then we have Core second form. So let us see. First is Foster 1 form. So basically Foster 1 form is obtained by partial fraction expansion of Zs. That means Zs will be given to us and we'll do the partial fraction expansion of Zs. From there we'll obtain Foster 1 form. Then we have Foster 2 form. So Foster 2 form is obtained by partial fraction expansion of Ys. Next is Cauer first form. Cauer first form is obtained by continued fraction expansion of immitance function by arranging numerator and denominator in descending order. The network function given to us, the network function, that means impedance function or admittance function, it has denominator polynomial and numerator polynomial. So we will arrange numerator and denominator both in descending order. Descending order means the highest degree term will be written first and lowest degree terms will be written at last, and then we'll do the continued fraction expansion. Next is Cauer 2 form or Cauer second form. So in the case of Cauer second form, again we'll do continued fraction expansion of immitance function by arranging numerator and denominator in ascending order. That means lowest degree terms will be written first and highest degree terms will be written at last. So let's start with LC immitance function. So in the case of LC immitance function, so we can have two combinations of L and C. First is L and C will be connected in series. Then second is L and C will be connected in parallel. So first let us see when L and C are connected in series. So we can say the impedance of inductor will be S into L and impedance of capacitor will be 1 by SC. So when we write impedance of the LC combination, that means series LC circuit, it will be SL plus 1 by SC. So from here we write Zs equal to S square plus 1 by LC divided by 1 by L into S, and we write Ys. So Ys will be equal to 1 by Zs and it is equal to 1 by L into S plus divided by S square plus 1 by LC. Next we have the parallel circuit, parallel LC circuit. So in the case of parallel branches are there, we write first admittance. So admittance will be SC plus 1 by SL. So it will be equal to S square plus 1 by LC divided by 1 by CS. And then when we write admittance, so it will be equal to Zs and it is equal to 1 by C into S divided by S square plus 1 by LC. So basically we'll do all the network synthesis by all the four methods, and here in the problem we'll use LC, that means two elements only, L and C. So let's start with a problem. The given that Zs equal to 2 into S square plus 1 into S square plus 9 divided by S into S square plus 4. We have to synthesize with LC elements in Foster first and second forms, then Cauer first and second forms. So let's start with Foster first form. So in the case of Foster first form, what is the step? We have to find the continued partial fraction expansion of Zs. So here Zs is given to us. So we write
we write Zs is equal to 2 into s square plus 1 into s square plus 9 divided by s into s square plus 4. So here we see that we can write Zs equal to 2s to the power 4 plus 20s square plus 18 divided by s cube plus 4s. Now we have to find the partial fraction expansion. So here we see that at the numerator we have 2s to the power 4. So first what we do? We divide 2s square plus 20s square plus 18 by s cube plus 4s. So we get quotient equal to 2s and remainder is 12s square plus 18. So we can write Zs equal to 2s, that is quotient, plus remainder, that is 12s square plus 18 divided by s cube plus 4s, or we can write s into s square plus 4. So we see that we have two terms, one is 2s. So next term is 12s square plus 18 divided by s into s square plus 4. Now we have to find the partial fraction expansion of this term. So we can write 12s square plus 18 divided by s into s square plus 4. It will be equal to as plus b divided by s square plus 4 plus c divided by s. Now we have to find a, b and c. So first we have to find c. So we can write c divided by s equal to 12s square plus 18 divided by s into s square plus 4. So here we put s equal to 0 and we see that s terms are cancelled. So we get c equal to 9 divided by 2. Now we have to find a and b. So to find a and b, we see that s square, when we make s square plus 4 equal to 0, from here we get s equal to plus minus j2. So we'll put s equal to j2, then we'll write as plus b divided by s square plus 4 will be equal to 12s square plus 18 divided by s into s square plus 4. So when we put s equal to j2, from here we get a into j2 plus b equal to j15 plus 0. So when we compare real and imaginary parts, we get a equal to 15 divided by 2 and b equal to 0 and c equal to 9 by 2. So we can write Zs equal to 2s plus as plus b means 15 by 2 into s plus 0 divided by s square plus 4 plus 9 by 2 divided by s. So now we have to synthesize the network. That means we'll have to write the real network. So we see that Zs is equal to first term is 2s. 2s means what? It can be a 2s can be the impedance of an inductor. That means 2s can be written as ls. That means the inductor having value 2 henry, its impedance will be 2s. So we got the first element. It is L1 equal to 2 henry. Next come to 9 by 2 divided by s. So this is basically the term of 1 by cs. This is the impedance of a capacitor and it can be written as 1 by cs. So when we compare 1 by cs with 9 by 2s, so from here we get c equal to 2 by 9 farad. Now we have the middle term, that is 15 by 2 into s divided by s square plus 4. Now we have to see what it can be. So I have already discussed series and parallel combination of LC circuit. Here it is given that impedance is equal to 15 by 2 into s divided by s square plus 4. So here we can see that the denominator term is s square plus 1 by LC, and we know that in the case of parallel LC combination, the impedance term is the numerator term will be 1 by c into s. So when we compare these two terms here, from here we can write c is equal to 2 divided by 15 farad and 1 by LC will be equal to 4. From here the value of L is equal to 1 by 4C2. From here it is equal to 15 divided by 8 henry. So we got the value of all the inductors and capacitors. Now we have to design the network. So the network can be written as, first is the inductor of 2 henry, then we have the capacitor of 2 by 9 farad, and then we have the combination of L and C in parallel. The value of capacitor is 2 by 15 farad and value of inductor is 15 by 8 henry. So this is the Foster 1 form. Now we have to start with Foster 2 form. So in the case of Foster 2 form, it is given that Zs equal to 2 into
s square plus 1 into s square plus 9 divided by s into s square plus 4. So we have to find the partial fraction expansion of ys in the case of Foster 2 form. Foster first form, we find the expression of partial fraction of zs. Here we will find the partial fraction of ys. So we will write ys will be equal to s into s square plus 4 divided by 2 into s square plus 1 into s square plus 9. So to find the partial fraction expansion of ys, it can be written as 1 by 2 into as plus b divided by s square plus 1 plus cs plus d divided by s square plus 9. To calculate the value of a and b, we'll write 1 by 2 into as plus b divided by s square plus 1 will be equal to s into s square plus 4 divided by 2 into s square plus 1 into s square plus 9. So when we put s equal to j1, we'll get ja plus b, and it will be equal to 3j divided by 8 plus 0. When we compare real and imaginary terms, we get a equal to 3 by 8 and b equal to 0. Now we have to find c and d. So to find c and d, we'll write cs plus d divided by s square plus 9 into 1 by 2 will be equal to s into s square plus 4 divided by 2 into s square plus 1 into s square plus 9, and we'll put s equal to plus j3. So when we put s equal to plus j3, we'll write j into 3c plus d will be equal to j15 divided by 8 plus 0. So when we compare the terms, the real term, imaginary term will be equal to 3c equal to 15 by 8. From here c is equal to 5 by 8 and the value of d is equal to 0. So we can write ys equal to 1 by 2 into 3 by 8 s divided by s square plus 1 plus 5 by 8s divided by s square plus 9. So we can write 3 by 16 s divided by s square plus 1 plus 5s by 16 divided by s square plus 9. So again we'll have to check. Here we see that the denominator is of the form s square plus 1 and s square plus 9. It means the both of these are combination of LC circuit. Now we have to check whether it is series combination or parallel combination. So since it is the admittance, so we see that series the admittance of series LC circuit is equal to 1 by L into S divided by S square plus 1 by LC. That means it is the form of series LC. So the now we'll compare the terms. That means here we'll compare 3 by 16 S. So 3 by 16 will be equal to 1 by L. So from here we'll write the value of L. So similarly we'll compare all the four terms and we'll write the values of inductors and capacitors. So here we see that 3 by 16 into S divided by S square plus 1 will be equal to 1 by L into S plus divided by S square plus 1 by LC. So from here we get L equal to 16 by 3 handy and value of C will be 3 by 16 farad. Next 5 by 16 into S divided by S square plus 9. So from here we'll get L equal to 16 by 5 handy and C will be equal to 5 divided by 1 by 5 by 144 farad. Now we have to write the Foster 2 form. We got the value of all the four elements L1, L2, C1, C2. So we see that this Foster circuit is basically combination of two series LC circuits. So two series LC branches are written here. Now since this is the YS, here is the YS term. YS means the Foster 2 form circuit will be in the form of parallel branches. So YS, so here we see that first branch will have 16 by 3 handy and 3 by 16 farad, and second branch will have 16 by 5 handy and 5 by 144 farad. So this is the circuit of Foster 2 form. Next, let's start the expression of electrical network, that means synthesis of electrical network in cover 1 form. So how to find in the cover 1 form? We saw that previously in the case of Foster 1 form, we do the partial fraction expansion of ZS, and Foster 2 form we do
the partial fraction expansion of ys. Here in the case of cover one form, we will do continued fraction expansion. Here we are not doing partial fraction expansion. Here we will do continued fraction expansion of immitance function. That means here we can do either with zs or we can do either with ys. So no problem here by arranging both numerator and denominator in descending order. Since numerator and denominator both are the polynomials, so now we'll arrange the numerators in descending order and denominators in descending order. That means numerators will be arranged, that means highest degree will be written first and lowest degree will be written at last. Similarly, denominator highest degree will be written at first and lowest degree will be written at last. So zs, given that zs is equal to 2 into s square plus 1 divided by into s square plus 9 divided by s into s square plus 4. Now there is a special note on this topic, that is cover one form. We see continued fraction expansion always inverts each remainder and divides. इसका मतलब क्या है कि जब हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन में हम लोग न्यूमरेटर के टर्म, जो हमारा न्यूमरेटर होगा फर्स्ट में, न्यूमरेटर हमारा डिविडेंड होगा और डिनोमिनेटर हमारा डिवाइजर होगा. तो उसमें कहा जा रहा है कि जो हम डिवाइड करने के बाद जो हमारा पहला कोसेंट आएगा और उस पहला कोसेंट आने के बाद हम लोग दोबारा क्या करते हैं, दोबारा जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को हम लोग डिवाइजर बनाएंगे और जो हमारा पहला डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा. तो इसका मतलब हम फर्स्ट में देखें कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर किए, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया गया. दूसरा में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड किया जाएगा. फिर थर्ड जब करेंगे तो थर्ड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा. तो चूंकि मान लेते हैं कि एक्सप्रेशन जेडएस का है, तो अगर जेडएस का एक्सप्रेशन है इसका मतलब कि जेडएस इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. तो पहली बार में जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो वहां जो कोसेंट आएगा वो कोसेंट भी क्या होगा, जेडएस होगा, जेड होगा. लेकिन दूसरे टर्म में क्या होगा, सेकेंड बार में हम लोग रिमाइंडर जो बचेगा उस रिमाइंडर को हम लोग डिवाइजर बनाएंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर था पॉलिनोमियल, वो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल अब डिविडेंड बन जाएगा. तो यानी वहां पर जो कोसेंट आएगा वो कोसेंट हमारा y होगा, ना कि z होगा. तो यही कहा गया है कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑलवेज इन्वर्ट्स ईच रिमाइंडर एंड डिवाइड्स. इट मीन्स सक्सेसिव कोसेंट्स अल्टरनेट बिटवीन z एंड y अगेन एंड अगेन. नाउ इट इज ऑल्सो रिटन दैट इफ इनिशियल फंक्शन इज इम्पीडेंस, अगर इनिशियल फंक्शन इम्पीडेंस है तो पहला कोसेंट इम्पीडेंस आएगा. अगर इनिशियल फंक्शन एडमिटेंस है तो पहला कोसेंट एडमिटेंस आएगा. सिमिलरली कावर टू फॉर्म में भी इसी तरह से जो हर बार हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसमें हमारा z और y का टर्म्स बार बार इन्वर्ट होता रहेगा. जो कोसेंट होगा वो कोसेंट y और z में इन्वर्ट होता रहेगा. इसको हम लोग डीप में देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से ये इन्वर्ट होता है. लेट्स सी. zs इज गिवन, zs is equal to 2s to the power 4 plus 20s square plus 18 divided by s cube plus 4s. So we have to synthesize the network in cover one form. So for cover one form we'll have to arrange numerators and denominators in descending order. That means highest degree term will be written first. So here we see that both numerator and denominator are already arranged in descending order, so we have no need to arrange it again. Now we have to start the continued fraction expansion. So numerator will be dividend and denominator will be divisor. So first quotient is coming 2s, so here we are getting 2s 4 plus 8s square. From here we get remainder 12s square plus 18. तो अब हम लोग देखेंगे जो पहला क्वोशेंट यहाँ पर 2s आ रहा है, इस क्वोशेंट को हम लोग लिख रहे हैं z1. z1 लिखने का कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि ये zs है, यहाँ पर zs दिया गया है, zs का न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है. तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो पहला क्वोशेंट जाएगा वो z होगा, ना कि y होगा. अब हम लोग क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर आया है, नाउ दिस रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर
and the denominator polynomial that is s cube plus 4s will become dividend। तो यहां पर जो दूसरा क्वोशेंट आ रहा है, सेकेंड क्वोशेंट इज s डिवाइडेड बाय 12, और जो s डिवाइडेड बाय 12 क्वोशेंट आएगा इसको हम लोग y2 लिखेंगे, ना कि z2, क्योंकि अभी हमने कहा था कि z और y जो क्वोशेंट्स हैं, क्वोशेंट्स का इन्वर्सन होता रहेगा z और y में अगेन एंड अगेन। तो यहां पर ये हमें मिला y2। नाउ द रिमाइंडर इज कमिंग 5s डिवाइडेड बाय 2। नाउ 5s डिवाइडेड बाय 2 विल बी डिवाइजर एंड 12s स्क्वायर प्लस 18 विल बी डिविडेंड। सो थर्ड क्वोशेंट कमिंग इज 24s डिवाइडेड बाय 5। सो हियर दिस विल बी अगेन नाउ z3। नेक्स्ट द रिमाइंडर इज 18 and now this 18 will now 5s by 2 will become dividend and 18 will be divisor। So fourth quotient coming is 5 divided by 36s। So here it will be fourth quotient will be y4। तो हमने देखा कि जो चार क्वोशेंट्स हमें लगातार आए हैं वो क्वोशेंट्स को हम लोग क्या लिखेंगे, z1 y2 z3 y4। इसका मतलब जो क्वोशेंट्स है वो क्वोशेंट्स हमेशा इनवर्स होता गया है। एक बार इंपीडेंस आया है तो दूसरा बार एडमिटेंस आया है। तो अब हम लोग इसी चारों क्वोशेंट्स को यहां पर लिखेंगे। फर्स्ट क्वोशेंट इज z1 इक्वल टू 2s। तो z1 इक्वल टू 2s, तो 2s कैन बी द 2s इज द इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर, सो इट कैन बी रिटन एज 2s इक्वल टू L1s। फ्रॉम हियर L1 इज इक्वल टू 2 हेनरी। नेक्स्ट सेकेंड क्वोशेंट y2 इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय 12। So y2 is equal to s divided by 12 means this is the it can be the admittance of a capacitor which will be equal to C2s। From here C2 is equal to 1 by 12 farad। Next Z3 third quotient is equal to 24s divided by 5। So it is the impedance of an inductor। So from here L3 will be equal to 24 divided by 5 handy। And next y4 is equal to 5 divided by 36s। So this is the admittance of capacitor, so it will be written as C4s। From here C4 will be 5 divided by 36 farad। तो हम लोगों को चारों एलिमेंट्स मिल चुका है। अब चारों एलिमेंट से हमें कावर फर्स्ट फॉर्म का सर्किट बनाना है। तो यहां पर देखिए जो कावर फर्स्ट फॉर्म का सर्किट होता है वो बेसिकली पहला एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट होगा, फिर दूसरा पैरेलल में, तीसरा एलिमेंट सीरीज में रहता है, चौथा एलिमेंट पैरेलल में। इस तरह से कावर का सर्किट बनता है, कावर वन फॉर्म का। तो पहला एलिमेंट हमें क्या मिला था, 2 हेनरी का इंडक्टर था। तो 2 हेनरी का इंडक्टर हमने सीरीज में कनेक्ट किया एंड नाउ C2 इज इक्वल टू 1 बाय 12 फेराड, यानी दूसरा एलिमेंट कैपेसिटर था, उस कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल ब्रांच में कनेक्ट किए। फिर तीसरा एलिमेंट इंडक्टर था, उसे सीरीज में कनेक्ट किए 24 बाय 5 हेनरी। एंड फोर्थ एलिमेंट इज कैपेसिटर, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल ब्रांच एंड इट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 36 फेराड। और यहां पर ये किस चीज को बतला रहा है, ZS को बतला रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कावर वन फॉर्म का सर्किट देख लिए। नाउ विल डील विथ कावर टू फॉर्म। तो कावर टू फॉर्म में फिर से नाउ अगेन द सेम इम्पीडेंस ZS इज गिवन। ZS इज इक्वल टू 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। We have to synthesize the network with LC elements in cover 2 form. So in the case of cover 2 form, we'll have to arrange both numerator and denominator in ascending order. That means lowest degree will be written first. तो यहाँ पर जो हम ascending order में अरेंज किए हैं, यहाँ देख सकते हैं लोएस्ट डिग्री यानी s टू दी पावर 0 वाले टर्म को पहले लिखा गया है, s टू दी पावर 4 वाले टर्म को लास्ट में लिखा गया है। सो इट इज रिटन एज 18 प्लस 20s स्क्वायर प्लस 2s टू दी पावर 4 divided by 4s plus s cube. Now we have to do the continued fraction. So continued fraction के लिए numerator will be 18 plus 20s square plus 2s to the power 4 and denominator is 4s cube plus 4s plus s cube. So first quotient will be what? First quotient is coming 18 divided by 4s. So this is the value of Z1. First quotient is coming as 18 by 4s or we can write it 9 divided by 2s। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि चूंकि इंपीडेंस था, हमें इंपीडेंस दिया गया था, इसलिए जो पहला क्वोशेंट होगा वो पहला क्वोशेंट इंपीडेंस आ रहा है, इट इज Z1। सो रिमाइंडर इज 31 डिवाइडेड बाय 2s स्क्वायर प्लस 2s टू द पावर 4। नाउ दिस रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल 4s प्लस s क्यूब विल बिकम डिविडेंड। सो नाउ सेकेंड क्वोशेंट इज कमिंग 2 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 4 डिवाइडेड बाय s। सो इट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 31s। तो यहां पर देखिए पहला क्वोशेंट इंपीडेंस आया था, तो दूसरा क्वोशेंट क्या होगा,
admittance होगा, that's why it is written y2. Now the remainder is 15 divided by 31 into s cube. Now 31 by 2 into s square plus 2s to the power 4 will be dividend. So we see the third quotient coming is 31 by 15 into 31 divided by 2s, that means 961 divided by 30s, so it will be z3, and the remainder is 31, remainder is 2s to the power 4. Now this remainder will become divisor and 51 by 15 divided by 31 s cube will become dividend. तो यहाँ से देख रहे हैं जो फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 31s, सो इट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 62s. तो जो फोर्थ क्वेश्चन होगा फिर ये इन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये y4 होगा. नाउ द रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स हमें कंटिन्यूड पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन हमें निकल चुका है. इसका जो टर्म्स आए हैं z1, y2, z3, y4. तो हम लोगों को सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है. देखिए z1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2s था, सो 9 डिवाइडेड बाई 2s कैन बी द इम्पीडेंस ऑफ ए कैपेसिटर, बिकॉज इन द केस ऑफ कैपेसिटर वी राइट द इम्पीडेंस इज इक्वल टू 1/C1s. यहाँ पर बस आपको देखना है कि अगर इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं तो इम्पीडेंस में अगर s न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर का मतलब इंडक्टर का इम्पीडेंस होगा. अगर इम्पीडेंस में s डिनोमिनेटर में है इसका मतलब ये कैपेसिटर का इम्पीडेंस होगा. सिमिलरली अगर हम एडमिटेंस की बात करें, एडमिटेंस में अगर s न्यूमरेटर में है इसका मतलब कैपेसिटर का एडमिटेंस होगा, और अगर एडमिटेंस में s डिनोमिनेटर में है इसका मतलब इंडक्टर का एडमिटेंस होगा. तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं C1 इज इक्वल टू 2/9 फेराड. Similarly, y2 equal to 3/31s from here. L2 is equal to 31 divided by 8 Henry. Z3 is equal to 961 divided by 30s. That means Z3 is equal to 1/C3s. So from here we get C3 equal to 30 divided by 961 farad, and y4 is equal to 15 divided by 62s. So it is equal to 1/L4s. From here L4 is equal to 62 डिवाइडेड बाय 15 हेनरी. तो हम लोग कावर्स टू फॉर्म का सर्किट फिर उसी तरह से बना देंगे. पहला ब्रांच सीरीज में हमारा कनेक्ट किया गया है, दूसरा पैरेलल, तीसरा सीरीज, चौथा पैरेलल में होगा. तो फर्स्ट ब्रांच क्या है, कैपेसिटर है, तो सो इट इज रिटन 2/9 फेराड. सेकेंड ब्रांच इज इंडक्टर, दैट इज 31 डिवाइडेड बाय 8 हेनरी कनेक्टेड इन पैरेलल. Third branch is series branch, that is 30 divided by 961 farad, and fourth branch is shunt branch, it is equal to 62 divided by 15 Henry. So this is covers second form. तो हम लोग देखें कि जितने भी सर्किट्स हम लोग कैलकुलेट किए हैं LC नेटवर्क का जो सिंथेसिस किए हैं LC एलिमेंट से, वो सारे सर्किट्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं सर्किट में, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, चाहे वह ZS का हो या YS का हो. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिसका हाईएस्ट डिग्री है तो हाईएस्ट डिग्री के बराबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ. यानी मान लें कि न्यूमरेटर में डिग्री s⁴ है, डिनोमिनेटर में s³ है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 रहे हैं, 2 इंडक्टर रहे हैं, 2 कैपेसिटर रहे हैं. तो हमने देखा कि एक इम्पीडेंस फंक्शन ZS इज इक्वल टू 2 इंटू s² प्लस 1 डिवाइडेड बाय s² प्लस 9 डिवाइडेड बाय s इंटू s² प्लस 4. एक इम्पीडेंस फंक्शन को 4 अलग फॉर्म में हम लोग किस तरह से सिंथेसाइज किए, फोस्टर 1, फोस्टर 2, कावर 1 एंड कावर 2 फॉर्म. तो हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे. इसके बाद वो हमारा LC सर्किट के बाद दूसरा RL सर्किट का के टर्म में देखेंगे, और फिर तीसरा RC एलिमेंट्स के टर्म में देखेंगे.